As we all are aware that every Sunday at 9 p.m. we discuss this class. We have a class where I discuss the static GK and current affairs. So in the initial portion, I discuss some current affairs and then static. Plus in the last portion, I discuss some XAT previous year question as well. The reason why I'm discussing the XAT previous year question is because it will help you understand which type of questions are being asked in the exam. Okay? Yes. So am I audible, guys? मेरी आवाज आ रही है? So if I'm audible, just write in the comments, yes sir, you're audible. Okay. So let's start with the first question of the day. So the first question says, recently the Libyan city of Dash was in the news because of dam collapse. Which city is being talked about here? Your options are Tripoli, Cairo, Derna, Algiers. What is the right answer to this question? आपको ये बताना है कि लीबिया की सिटी है जो कि न्यूज में है, क्योंकि उसमें डैम कोलैप्स हुआ था उस शहर में. कौन से शहर की बात हो रही है? And this was very much in the news, and yes, they can ask it most likely, of course. What is the right answer? And if I'm audible and visible, just write. एक बार आप आवाज में comment section में लिख दो. Okay, yes, Srishti, very good. The right answer is Derna city. So let me show you. So here is India. This is Africa continent. यहाँ पे लीबिया में एक ऊपर में जगह है Derna. Okay, so the right answer is C is the right answer. So Derna city is in news because actually it was it had witnessed a dam collapse, so it was in the news. Yes, here it is actually on the post. Libyan dam collapse, engineering expert raises question about management and all. It was in the news. The next is, what is the name of the storm that hit Libyan city of Derna causing dam collapse? Tej, Storm Tej, Daniel, Julia, Falin. What is the right answer to this question? उस स्टॉर्म का नाम बताना है जिसके वजह से डैम कोलैप्स हुआ डेरना सिटी में, ये आपको बताना है. ओके, दीज आर ऑप्शंस. व्हाट इज द राइट आंसर? एनीवन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डैनियल स्टॉर्म इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये काफी न्यूज में था, स्टॉर्म डैनियल, है ना. सो एक्चुअली you should be knowing Mediterranean tropical like cyclone and all, it was in the news. So B is the right answer to this question. Okay. Yes, let's move on to the next one. The question number 3. What is the name of the water body touching Libya? जो लीबिया से वाटर बॉडी टच कर रहा है, जहां से स्टॉर्म आया था, उस वाटर बॉडी का नाम बताना है. रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन, कैस्पियन सी. So these are the things in the news, and that is why the probability is high. They can ask questions. Yes, Srishti, Ranjan, very good. इससे पहले का आंसर B था. And what about this? The water body touching Libya is also option B, Mediterranean Sea. So B is the right answer to this question as well. Okay, let me show you. So here is India, this is Africa continent, यहाँ पे Libya है, this one is Mediterranean Sea. Okay, this one is Mediterranean Sea, and on the northern portion of Libya you will find it Derna. Okay, now one more thing. Yes, Naveen Chaudhary, you are also right. So this one is Mediterranean Sea, and here is Atlantic Ocean, and the water body that is connecting the two is the strait that is connecting the two is called as Strait of Gibraltar or Gibraltar Strait. Okay, is it clear? So that is what you should be knowing about it, है ना. So यहाँ लीबिया है, यहाँ डेरना, यहाँ मेडिटेरियन सी. यहीं से storm आया था, Daniel storm, that hit and that led to the collapse of dam in Derna city. So just have an idea because it has been very much in the news. ये वाला पूछा हुआ है. Strait of Gibraltar was asked in the one of the MBA exams earlier. Okay, which connects Mediterranean Sea with Atlantic Ocean. Okay, या इस तरह पूछा है कि स्पेन से मोरक्को को कनेक्ट करता है and all. ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है. And the Strait of Gibraltar is actually controlled by UK, England. ठीक है. So these have been these types of questions have been asked in the past. That is why I'm discussing it. Now the next is, this year we have seen Asian Games 2022, which actually happened in China. So it is written 2022 because ideally it was supposed to happen last year, but because of COVID and all, it happened this year. Okay, so you are supposed to tell me the motto of Asian Games 2022, and these are options: games to games at future, build back better world, games for winner, heart to heart at future. What is the right answer to this question? बताइए, motto of Asian Games 2022 क्या है? Anyone? And everyone please press the like button, guys. सबको like button press करते जाना. Yes, what is the right answer? So the right answer is option D, heart to heart at future is the right answer. Motto of Asian Games is heart to heart at future. So D is the right answer to this question. ठीक है. Okay, let's move on. Yes, 19th Asian Games Hangzhou 2022, heart to heart at future. So D is the right answer.
Let's move on. कहाँ पे हुआ था Hangzhou? So here is India, this is China, this one is the place Hangzhou. ठीक है, Hangzhou. Okay, yes. Okay, the next one is GPAI partnership. Global Partnership on Artificial Intelligence was first proposed by whom? So it was in the news at the time. GPAI काफी news में आ रहा था, and that is why I'm asking this question. France and India, Canada and France, France and Germany, US and Canada. What is the right answer to this question? GPAI partnership क्या चीज से related है इसमें से आपको बताना है. France and India, Canada and France, France and Germany, USA and Canada. What is the right answer? So actually originally it was proposed by Canada and France. GPAI है Global Partnership on Artificial Intelligence. ये काफी न्यूज में चला था भी recently also. That is why you should be knowing about it, because of course artificial intelligence has been in the news, especially after the upcoming of ChatGPT launched by OpenAI, है ना. OpenAI is the company. इनके CEO अभी न्यूज में थे, है ना, Sam Altman. So he was fired later on. The decision was withdrawn and all. तो ये पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में कि OpenAI के CEO का नाम बताइए. सैम ऑल्टमैन है, ठीक है. चैट जीपीटी का जीपीटी का फुल फॉर्म पूछते हैं, जैसे चैट जीपीटी में दे कैन आस्क द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी. ये पूछा है टेस्टनेट पे साल. सो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. सो दीज आर द थिंग्स दे कैन बी आस्किंग इट. ओके, यस. So here the right answer is B is the right answer to this question, and artificial intelligence has been very much in the news. Caucasus region is found in which continent? Africa, Asia, North America, South America. Caucasus region आपको कहां पर मिलेगा? कई बार न्यूज वगैरह में रहता है. So that is why I'm asking it. Where do we find it in which continent? What is the right answer? Yes, the right answer is actually option B. Asia is the right answer to this question. So this one is Asia, है ना. ये वाला जो ये Caspian Sea है ना, ये टाके ये वाला, this is Caspian Sea. Okay, so this region is called as Caucasus. Okay, yes, the right answer is B is the right answer. Yes, Niraj, you are right. B is the right answer to this question. Okay, let's move on to the next one. Which of the following amendments deals with NJAC? इस तरह क्वेश्चन इस बार I think CMAT या TISSNET ने पूछा था, इस तरह का चीज पूछ रहे हैं. Actually, the Supreme Court judges are appointed by collegium. This is the 5-member collegium of Supreme Court appoints the Supreme Court judges. Okay, but there was a proposal to replace the collegium with NJAC, National Judicial Appointment Commission. ठीक है, and that is done under 99th amendment, but NJAC was declared invalid by Supreme Court. The invalid by Supreme Court, ठीक है, or ultra vires the constitution. ठीक है, so 99th amendment was passed, and also B is the right answer to this question. Okay, so just have an idea. National Judicial Appointment Commission was set up and all. Yes, इसके बारे में पढ़ सकते हो, but in 2015 it was struck down and all. फिर बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉल्ड? मैकमोहन लाइन, दुरंद लाइन, एलओसी, एलएसी. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? दीज आर योर ऑप्शंस. मैकमोहन लाइन, दुरंद लाइन, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? एनीवन? So the right answer is Durand line. So B is the right answer to this question. Let me show you. ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये वाली लाइन को कहते हैं Durand line. Okay. Yes, Deepanshu Pathak, you all are right. B is the right answer. Okay. The next is what is the boundary line between India and China at Arunachal Pradesh called? McMahon line, Radcliffe line, LOC, LAC. इंडिया और चाइना के बीच जो अरुणाचल प्रदेश के पास जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्या कहते हैं? There's a special name for that, and this has been asked many times in the exam. So what is the right answer? The right answer is McMahon line. A is the it's A actually. A is the right answer. McMahon line is the right answer. ठीक है. देखो ये वाली जो लाइन है ना, this one, अरुणाचल प्रदेश boundary with China. So that's called as McMahon line. ठीक है. That you should be knowing about it. Okay. Yes, the right answer is A is the right answer to this question. Yes. Okay. ठीक है. अच्छा, ये तीनों के बारे में पढ़िएगा जाके. Where is Radcliffe line? What is line of control? What is line of actual control? Because these are the things also in the news,
and can be asked in the exam. So here the right answer is A, but please read about option B, C, and D as well. Okay. The next is, which of the following Security Council resolution calls for combating terrorism, upholding human rights after Taliban came to power? So UN Security Council, कौन सा UN Security Council resolution इसकी बात करता है? 1325, 2594, 1267, none of the above. What is the right answer to this question? कौन सा UN Security Council resolution इसकी बात करता है? The right answer is option B, UN Security Council resolution 2593 is the right answer to this question. है ना? Okay. Yes. So just have an idea. B is the right answer. The next is, India established diplomatic relations with Canada in X. See, I hope you are aware, recently we have seen some issues with India-Canada diplomatic relations and all. And that is why it becomes very important, so that you should be knowing the capital of Canada is Ottawa. The Prime Minister is Justin Trudeau. I hope you are aware of that. Justin Trudeau, let me write. Prime Minister is Justin Trudeau. So we should be knowing something about Canada as well. And Canada is actually the country with longest coastline. सबसे लंबा coastline Canada का है. ये भी सवाल पूछा जाता है. So here the right answer is B. 1947 is the right answer. So we established the diplomatic relations just after we got independence and all. So 1947 में ही we established the diplomatic relations. So B is the right answer. The next is, who is India's High Commissioner to Canada? Suhail Ajaz Khan, Sanjay Kumar Verma, Sanjeev Singla, Geetika Srivastava. What is the right answer to this question? India's High Commissioner to Canada कौन है? Right now, High Commissioner भाई ambassador को High Commissioner कहते हैं. But in case of Commonwealth nations, instead of ambassador, we use the word High Commissioner. ठीक है? Who is India's High Commissioner to Canada? The right answer is Sanjay Kumar Verma. So B is the right answer to this question. ठीक है? You should be knowing about that. Okay, let's move on. आप देख सकते हो Sanjay Kumar Verma. To the next one. Prime Minister's visit to Canada in X elevated the bilateral relationship to a strategic partnership. So India Canada strategic partnership हो गई थी इस साल. कौन से साल? 2015, 11, 1991, 2006. What is the right answer to this question? PM's visit to Canada in this year elevated bilateral relationship to a strategic partnership. So in 2015 actually PM Modi visited Canada. ठीक है? और उसके बाद we are having the strategic partnership with Canada and all. तो ये सब पता होना चाहिए because Canada has been in the news and all. ठीक है? So this question can be asked and all. The next, okay, just before moving on, guys. So if you are planning for next year CAT and all, we are providing a 3-day free trial also. So download our app, go to CAT section where you can get the access to our paid courses for 3 days for free. And we are providing 80 plus mark, 10,000 plus practice question, all India open mock video solutions as well. अगर आप ZAT का इस बार एग्जाम दे रहे हो, so we are actually having a crash course on the same YouTube channel. 19th December we are running at 7 PM. So do follow it. That would be very very beneficial for you. And ये CAT calculator है, score calculator है, percentile predictor है. So you can go and attempt this as well, and you can check it कि कहाँ पर आपका आ रहा है, what is the percentile you are getting. And CAT college predictor based on profile. So this is actually you should be knowing it, है ना? On our app go, है ना? आज को जाके check करो. And yes, snap analysis से एक आज हुआ था. Today we have done an analysis on the same YouTube channel. So please go and watch it. And on 17th and 22nd we'll be having the snap 2023 analysis as well. ठीक है? So the second slot, second, third and all. ठीक है? Okay, so do follow it on our YouTube channel. Let's move on to the next one. The concept of AFSPA, Armed Force Special. देखो originally Armed Force Special Powers Ordinance था. Later on वो AFSPA बन गया. First came in the year 1920, 1857, 1942, 1984. Concept of AFSPA सबसे पहले कब आया था? Armed Force Special Powers Act. I hope you are aware it is now enforced in Jammu and Kashmir, some states of Northeast and all. So the right answer is C is the right answer. 1942 में, ठीक है? So you should be knowing about it. Armed Force Special Powers Ordinance first came in the year 1942. Okay, and center extends AFSPA in parts of Nagaland, Arunachal for another 6 months and all. तो ये पता होना चाहिए आपको. इससे रिलेटेड बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, जैसे BP Jeevan Reddy committees, they are very famous. ठीक है? Okay, sometimes these types of questions are asked. Okay, yes, सबसे पहले 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, क्विट इंडिया मूवमेंट at that time. ठीक है? So C is the right answer.
The next is Dash was the Hindu philosopher, reformer, and founder of Arya Samaj. He emphasized on go back to Vedas. And recently we have celebrated his 200th birth anniversary. Which person is being talked about? Raja Ram Mohan Rai, IC Vidyasagar, Swami Vivekanand, Dayanand Saraswati. आपको ये बताना है आर्य समाज के वो फाउंडर थे और उन्होंने गो बैक टू वेदास का कोट दिया था, मतलब he emphasized on that, and on this year 12th February we celebrated his 200th birthday. So what is the right answer? The right answer is, anyone? Founder of Arya Samaj? कोई जानता है? The right answer is option D. Dayanand Saraswati is the right answer to this question. The next is, what was the original name of Dayanand Saraswati? उनका original name बताना है. Because 200 birthday था ना, इसीलिए it becomes important. ठीक है. And his original name was मूल शंकर तिवारी. ठीक है. So इससे पहले का D था. Yes, दीपांशु and जगदीश, you all were right. और नरेंद्र नाथ दत्ता जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था. Okay. Yes. So here the right answer is B is the right answer to this question. Okay. The next is, who wrote the book Satya Prakash? Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Raja Ram Mohan Rai, IC Vidyasagar. What is the right answer? सत्य प्रकाश बुक किसने लिखी थी? Guys, please press the like button. सबको like button press करते जाना. So it was written by none other than Dayanand Saraswati. ठीक है. So you should be knowing about it. इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. देखो, he was born as मूल शंकर तिवारी and all. ठीक है. So okay. इनका रिफॉर्म मूवमेंट है ना. So आर्य समाज फाउंडर है ना. So he denounced the idolatry and all. Okay. And recently we have celebrated his 200th birth anniversary. ठीक है. So that is why he becomes very important and all. Okay. The next is, who is famous for giving speech on 11th September 1893 in Parliament of World Religion? Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Raja Ram Mohan Rai, IC Vidyasagar. वर्ल्ड रिलीजन के पार्लियामेंट में किन्होंने, कौन बहुत फेमस है स्पीच देने के लिए इन चारों में से? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद है ना. सो इज वेरी फेमस एट शिकागो है ना. Chicago World Religious Conference happen and all. So that's very famous. I hope आपको पता होगा. Yes, Jagadesh, Nilesh, you all are right. B is the right answer. Now the next is, asteroid belt is found between which two planets? Jupiter and Saturn, Mars and Jupiter, Venus and Neptune, Mercury and Venus. देखो, एक एस्ट्रॉयड, उसका नाम है बेन्नू एस्ट्रॉयड. इसको रिसर्च करने के लिए एक नासा का मिशन है, ओसिरिस रेक्स मिशन. I hope you are aware of that. बेन्नू एस्ट्रॉयड. So the asteroid belt you will find between Mars and Jupiter. So B is the right answer. Yes, दीपांशु. Yes, हाँ, B is the right answer. देखो यहाँ पे ना, Mercury, Venus, Earth, Mars है और ये Jupiter है. ठीक है. इसके बीच में you will find here somewhere the asteroid belt. Okay, so B is the right answer. Okay. The next one is question 20. Which of the following releases Global Gender Index report? Your options are UNDP, World Economic Forum, World Bank, International Monetary Fund. ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? राइट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है. तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है. ये काफी न्यूज में था. इंडिया गॉट 127th रैंक एंड ऑल ना. 8 प्लेसेस क्लाइम ऊपर आ गया ना, 135 से 127. सो इट्स अ गुड थिंग है ना. सो बी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट वन इज, डैश इज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री. यानी जेंडर इनइक्वालिटी में है ना, डैश होता है पे वाई लिख दिया मान लो. चलो, तो ये वाई कौन सा कंट्री है जो रैंक 1 है जेंडर इनइक्वालिटी में ना, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर गैप रिड्यूस करने में. ठीक है. तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, सो द रैंक द बेस्ट कंट्री इज आइसलैंड एक्चुअली. सो सी इज द राइट आंसर. यस दीपांशु, सी इज द राइट आंसर. आइसलैंड इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Let's move on to the next one. Which country was the first to give right to vote to women? Now it is important. Why? Because we are recently talking about women's reservation in parliament, है ना. Women's reservation वगैरह की बात हो रही है, right? So this becomes very important. These things है ना, women's reservation, right to vote and all. So first country कौन सा बना था जिसने right to vote दिया था women को?
Anyone? Denmark, Norway, Iceland, New Zealand. What is the right answer? First to give right to vote to women. The right answer is New Zealand. D is the right answer to this question. Okay, yes. First in the world where women give. Okay, yes. Jagadesh, Deepanshu, you all are right. D is the right answer. President gives assent to women's reservation bill and all. है ना? ये काफी news में था, है ना? So women's reservation bill will provide reservation of 33% to women in what? Parliament and state legislature, Lok Sabha and legislative assembly, Lok Sabha and Rajya Sabha, Parliament, state legislature and पंचायत. कौन सा वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है? जो 33% रिजर्वेशन है वो किस किस हाउस में दिया जाएगा? देखो, पार्लियामेंट में, लोकसभा में दिया जाएगा और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाएगा. ठीक है, तो पूरा पार्लियामेंट नहीं होगा बिकॉज राज्यसभा वगैरह में नहीं दिया जाएगा. ठीक है, सो बी केयरफुल. ओनली लोकसभा एज फार एज पार्लियामेंट इज कंसर्न एंड एट स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी गिवन. सो द मोस्ट परफेक्ट आंसर इज बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये सब पता होना चाहिए. ठीक है ना, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज 128th अमेंडमेंट बिल और बाद में जो अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, दिस इज कॉल्ड एज 106th अमेंडमेंट एक्ट. सो प्लीज रिमेंबर इट. These types of questions can be asked in the exam. 128th Amendment Bill and 106th Amendment Act. Okay, it's called. Now, let's move on to some previous year question. Why I'm asking it? Because you will get an idea which type of questions are being asked. ठीक है, आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह का क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूं. विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट कैदी कविराई की कुंदालियान, अ पोएटिक कंपाइलेशन व्हाइल बीइंग लॉन्च्ड इन जेल. जब वो जेल में थे तो कौन से फॉर्मर पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने ये किताब लिखी थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कभी जेल में होंगे उस टाइम पर की बात है. ठीक है, तो उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी. किसकी बात हो रही? जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी. अच्छा, अब आप एक चेक करो कि क्या सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है. हाँ, अगर कोई नहीं होते तो आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते कि ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे. बट ऑल ऑफ देम हैव बीन प्राइम मिनिस्टर इन द इन द पास्ट एंड ऑल. सो ये सारे प्राइम मिनिस्टर रहे कभी ना कभी, तो इसमें से आप कोई ऑप्शन इस लॉजिक से नहीं एलिमिनेट कर सकते हो. सेकंड थिंग, अब आप देखो पोएटिक कंपाइलेशन. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, सम पीपल आर सेइंग जवाहरलाल नेहरू नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यू मस्ट हैव हर्ड इट कि अटल बिहारी वाजपेयी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री. उन्होंने बहुत सारी पोएट्री लिखी थी एक्चुअली. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बाकी लोग नहीं थे फॉन्ड ऑफ, बट यस, अटल बिहारी वाजपेयी वाज फेमस फॉर हिज पोएट्री एंड ऑल. सो अगर थोड़ा सा भी किसी को पता होता, अगर वो तुक्का मारता भी, ऑप्शन ई, सो द प्रोबेबिलिटी वाज वेरी हाई. ठीक है, सो ये पता होना चाहिए. Just have an idea, maybe they can repeat sometimes. Questions gets repeated and all. So E is the right answer. Yes, Jagadesh, very good, है ना. A poet politician whose words had fire and magic. ठीक है, तो अगर आप ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ोगे, if you read it, they have actually talked about it. इसके बारे में बात किया ये वाले. ठीक है, खैर, let's move on to the next one. Now, ये क्वेश्चन आप रीड करो और आप अगर आप आंसर कर दोगे, I'll be very happy. ठीक है, and if you will not answer it, still I'm here to help you out. ठीक है, I'm giving you some time, please think and answer it. देखो, मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट ईयर मतलब 2023 में क्यों पूछा गया था. I will tell the reason, but still अगर आपको करंट अफेयर्स आप नहीं भी फॉलो कर रहे होते तो भी आप कुछ हद तक कोशिश कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं पहले बता देता हूँ, लेट मी टेल यू. अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर इट. कोई बता दे, सो आई विल बी वेरी हैप्पी. Anyone? I'm waiting for the answers. Try कीजिए. एक से दो मैच कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा. हो सकता है किसी केस में एक ही ऑप्शन मैच कराओ तो आंसर आ जाए. Anyone try it please? No one is. देखो, मैं बताता हूं. ये है कंचनजंगा. एक्चुअली ठीक है, इसका स्पेलिंग ऐसे लिखा है कि थोड़ा सा आदमी डर रहा है, बट कंचनजंगा इज एक्चुअली इन सिक्किम, है ना, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर आप इससे करते तो ये और ये आ गया. ठीक है, सो आप जो है ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट कर दिए. ठीक है, हम्पी इन कर्नाटक. यस, वेरी गुड दीपांशु. तो आप एक तो ऐसे कर सकते थे. दूसरा, हम्पी जो है कर्नाटक में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, एस का 3 है, वो भी कर सकते थे. तो आंसर बी. देखो, अब मैं बताता हूं करना क्या था. फर्स्ट, ये दोनों न्यूज में था. ठीक है, वाई धोलावीरा इज इन गुजरात एंड काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल इज इन तेलंगाना. बोथ वेर इन द न्यूज. देखो, इसलिए न्यूज में था.
देखो 27 जुलाई 2021, 27 जुलाई 2021, यस। एंड दिस क्वेश्चन, धोलावीरा इन गुजरात एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तेलंगाना रामप्पा टेम्पल, इसी को काकातिया टेम्पल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल है ना, इसी का नाम रामप्पा टेम्पल भी, ओके, बोथ आर सेम थिंग। So this was Telangana's Ramappa temple added in UNESCO World Heritage Site, ठीक है। जो कि ये न्यूज में था 1-2 सालों में, इसीलिए उन दोनों ने यहां पर डाला था उसको, ठीक है। और शायद आपको पता होगा खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, इट्स वेरी फेमस एंड ऑल, है ना। हम्पी नाम से ये कर्नाटक में, ठीक है। कंचनजंगा इज इन सिक्किम, तो आप लिमिट रीच कर सकते थे ऑप्शन पे लाइक दैट, ठीक है। नाउ अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस तरह क्वेश्चन आता है, इसलिए इस साल भी 2 ऐड किया गया है, ठीक है। सो अर्लियर वी हैड 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। रिसेंटली 2 हैव बीन एडेड एंड नाउ वी आर हैविंग 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब आपको यह बताना है कि कौन सा 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में ऐड किया गया है। व्हाट आर दोस 2 साइट्स? होयसाला एंड खजुराहो, होयसाला एंड शांति निकेतन, ताजमहल एंड धोलावीरा, मोहनजोदारो एंड ताजमहल। Which 2 sites have been added this year? I mean hardly, I guess few months back. और ये पूछा जा सकता है, हो सकता है मैच द फॉलोइंग पूछ दे या कहीं भी पूछ दे, और प्लीज लोकेशन के साथ बताओ कि कौन जगह पे है वो। आई एम वेटिंग फॉर इट। व्हाट इज द राइट आंसर? एनीवन? मैंने आई थिंक पहले बताया भी होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, स्टार मार्क लगा लेना। सो द राइट आंसर इज, एनीवन गाइस? बी, ऑप्शन बी, होयसाला टेम्पल्स एंड शांति निकेतन। यस, दीपांशु हैज आंसर्ड इट। So Hoysala temples you will find it in Karnataka, Hoysala empire से, है ना। Shanti Niketan you will find it near Kolkata, West Bengal, from where Rabindranath Tagore is associated, ठीक है। So B is the right answer to this question. Yes, Nilesh Singh, Deepanshu, you all are right, है ना। 42 sites है UNESCO World Heritage Site का, है ना। देखो दोनों 2023 में ऐड किया गया। So now these two becomes very important and they can ask it. वो मैच द फॉलोइंग में पूछ देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे। So Shanti Niketan you will find it in near Kolkata in West Bengal, and Hoysala you will find it in Karnataka, ठीक है। So please go and read something about it. थोड़ा सा इन दोनों के बारे में विकिपीडिया पे जाके पढ़ भी लीजिएगा, because yes they can ask it, ठीक है। Yes, Deepanshu, Vedika, Thakur, you all right. B is the right answer, Nilesh. Now the next is, who is the first field marshal of independent India? अब आप पूछते हो सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों डिस्कस कराते हो? Because this previous year question has been repeated many times. ये कई बार MBA के एग्जाम में पूछा गया। फर्स्ट फील्ड मार्शल जो होते हैं 5 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं, तो कौन थे फर्स्ट फील्ड मार्शल? सैम मनेक्षा, एएस वैद्य, केएम करियप्पा, बिपिन रावत, कृष्ण स्वामी सुंदर जी। व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? हाँ, यस दीपांशु, गरबा डांस को भी किसी चीज में ऐड किया गया। यस, यू आर राइट, एंड गो एंड फाइंड आउट दैट एज वेल। फर्स्ट फील्ड मार्शल एक्चुअली इन पर फिल्म बनी अभी रिसेंटली। द ऑप्शन इज ए, सैम मनेक्षा पर फिल्म बनी। आई होप यू आर अवेयर। सैम बहादुर भी इनको कहते थे, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, ठीक है। And this has been asked many times in exam. Okay, A is the right answer to this question. Yes, Jagadesh, you are right. A is the right answer. The next is, which of the following wild animal has the subspecies as Sri Lankan, Indian, Sumatran and Bornean? ठीक है, ये कहा देखो, सुमात्रा एंड बोर्निया जो है ना, ये सब आइलैंड है इंडोनेशिया का, ठीक है। सो कौन सा वाइल्ड एनिमल का सब स्पीसीज है? श्रीलंकन, इंडियन, सुमात्रन, बोर्नियन। And these are your options: spotted deer, Asian elephant, Saras crane, tiger, rhinoceros. What is the right answer to this question? Anyone? The right answer is Asian elephant, ठीक है ना। तो इनके बहुत सारे just have an idea. Okay, the next one is, according to the venture capital industry, what is a unicorn? ये बताना आपको, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? एनीवन गाइस? तो यूनिकॉर्न जो होता है, जिसका जिसका वैल्यूएशन जो $1 बिलियन को वैल्यूएशन, अगर ये टर्म देखो मैं बताता हूं। सो द वर्ड यूज इज वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप, अगर $1 बिलियन है, दैट्स कॉल्ड एज यूनिकॉर्न। सो द राइट आंसर इज डी, है ना, ठीक
ठीक है, यूनिकॉर्न कहते हैं इसको, ठीक है। सो जैसे अभी इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूनिकॉर्न्स, स्टडी सेज, है ना, अभी नवंबर की आर्टिकल है, ठीक है। सो यस, दीपांशु, नीलेश, यू ऑल राइट, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ये भी काफी न्यूज में था, मैंने बताया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, ये सब है एनएफटी। सो दीज आर इन द न्यूज। सो एनएफटी जो है वो ब्लॉकचेन कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज को कहते हैं? दिस हैज बीन आल्सो वेरी मच इन द न्यूज। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द आंसर इज नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। इसको पढ़ना थोड़ा सा, इट्स समथिंग यूनिक, है ना। हर किताब, हर एवरीथिंग इज एक्चुअली यूनिक पीस ऑफ आर्ट, डिजिटल कंटेंट एंड ऑल। सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस नीलेश, यू ऑल राइट, बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको ग्रुप ऑफ एनिमल्स को इसे मैच कराने किसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? कलेक्टिव नाउन्स में एनीवन? देखो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। देखो जिराफ जो होता ना है और टावर, ये टर्म मैच करता है, ठीक है। एक टर्म कहा जाता है जैसे टावर ऑफ जिराफ्स, ये कन्वोकेशन ऑफ ईगल्स, ये बहुत मशहूर है, कन्वोकेशन ऑफ ईगल्स एंड टावर ऑफ जिराफ। तो इससे आप पहुंच सकते थे आंसर पे, ठीक है। सो पी का 5 है ना, पी का 5 अगर आप देखोगे यहीं पे है और यहाँ पर है, ठीक है। बाकी एलिमिनेट कर दिया आपने, ओके। फिर दूसरा है, अगर जिराफ का टावर आपको पता होता आर का 1, देन यू कुड हैव आंसर्ड इट वेरी इजीली। सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है, पता होना चाहिए। और क्यू का 4 यानी एप जो है वो श्रूडनेस, क्यू का 4, ठीक है। आर का 1 है ना, वो तो हो गया। एस का 3, सो बटरफ्लाई इज फेमस फॉर कैलेडोस्कोप। एंड टी का 2 यानी कोबरास का क्यूबर, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बस एक दो पे अगर आप मैच करा दोगे, सो यू विल रीच टू द आंसर, दैट्स द आइडिया। The next one is monosodium glutamate is what? The reason one cries while peeling onion. Name of the company that makes Ajinomoto, found in tomatoes, not found in any fruit or vegetable. A misnomer since it does not contain sodium. देखो आप ऑप्शन डी आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, किसी भी फ्रूट या फल में नहीं पाया जा सकता है। दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड बिलीविंग इन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कोई भी ये सही स्टेटमेंट देगा, बिकॉज अगर एक भी एक्सेप्शन निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन। सो डी कैन नॉट बी द आंसर। दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शंस, ठीक है। सो द राइट आंसर एक्चुअली हियर इज फाउंड इन टोमेटोज, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जस्ट हैव एन आइडिया। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। फाउंड नेचुरली इन सम फूड्स इंक्लूडिंग टोमेटोज एंड चीज, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज अच्छा, अब बुक्स एंड ऑथर्स मैच कराने को क्वेश्चन पूछा गया है ना। मैंने आपको बार बार बोला है कि इसमें से एक दो ऐसी बुक होती है जो करंट अफेयर्स में पिछले 1-1.5 सालों में न्यूज में रहती है, ठीक है। एंड जस्ट यू मैच दैट वन एंड यू विल रीच टू द आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? अगेन यू हैव टू मैच इट। सिर्फ एक मैच कराओगे, एक या दो, तो आप पहुंच जाओगे। And one of them was actually in the news, and that is why you could have easily answered it. Okay, so the right answer actually is देखो, नायरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, दीनयार पटेल। देखो ये बुक काफी फेमस हुई थी, देखो 1 दिसंबर 2021 है ना, and this was asked in XAT 2022. It means 1 month later this question was asked. Diniar's Patel biography of Dadabhai Naroji wins Kamala Devi Chattopadhyay Award, NIF book prize. Yes, 1 December 2021, and they asked it in January 2022 है ना। So hardly 1 month before this was in the news. अगर आप इसको यहाँ से मैच कराते हैं T का 1, so there is actually only one place where you will find T का 1. Okay, are you able to see it? That is why I am discussing previous year question, ताकि आपको आइडिया लगे, ठीक है। अब P का जो है 4 है, निरुपमा राव फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया की, ठीक है। सो Q का 3 है, ठीक है, Q का 3 है, R का 5 है, एंड S का 2 है, ठीक है। So just have an, ये भी इनफैक्ट न्यूज में था, ठीक है। This was also in the news. So just have an idea. So ये न्यूज में था, and that is why they have asked this question. Okay, yes. Let's move on to the next one. The next is question number 34. What is a grey market? देखो मैंने बताया ना, इकोनॉमिक्स का टर्म्स पूछता है, जैसे यूनिकॉर्न क्या है, ग्रे मार्केट क्या है,
फिर उन्होंने पूछा था ये कि गिग वर्कर के कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है. सो दीज आर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. सो व्हाट इज द ग्रे मार्केट? अच्छा, हम लोग इससे टर्म यूज करते हैं, ये बहुत ग्रे एरिया है, समथिंग लाइक दैट. यस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज गोइंग नियर टू दैट? इससे पहले का डी आंसर था, ठीक है ना? आंसर बताइए तो. यस, प्रणीत अमृत वाज राइट. डी, इससे पहले का आंसर डी था. इसका जो आंसर है वो है लास्ट, द ट्रेड ऑफ अ कमोडिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, सो दैट्स यस. दीपांशु पाठक, प्रणीत, यू आर राइट, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा ग्रे मार्केट के बारे में पढ़ लीजिएगा, because of course these types of questions can be asked in exam. Okay, the next is the book Prophet Song. ये पूछा सकता है, अभी recently 26 नवंबर को डिक्लेयर किया गया. Has won the Booker Prize. It has been written by Shehan Karunthalika, Paul Lynch, Anna Burns, Douglas Stott. Prophet Song को Booker Prize मिला है. किसने लिखा है इसको? Who has written this? Yes, the right answer is Paul Lynch. So B is the right answer, है ना? Prophet Song Paul Lynch के द्वारा लिखी गई. So very very important, ठीक है ना? So this becomes important. Star market, ठीक है? Yes, Deepanshu, you are right. B is the right answer to this question. Okay, yes. So these are our CAT 2022 toppers, and yes, if they can do it, you can also do. Okay, so this is all about today's class. Please follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S Exam Prep app. Subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.